Starting with the securitization from the uh, instituted material, learning outcomes. After going through this chapter, students should be able to understand introduction, concept and definition, benefit. Benefit may we understand that's the benefit to like bank originator, to investor, participants, mechanism, problems, instruments जिसमें पे थ्रू सिक्योरिटी, पास थ्रू सर्टिफिकेट एंड स्ट्रिप सिक्योरिटीज, प्राइसिंग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन फ्रॉम इशूइंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशल पर्पस व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इंडिया में उसका क्या ग्रोथ है. These are the things that we are going to discuss. I'm going through the module and we'll discuss any new point that we may have. Some of the companies or the firms who are involved in sending money or making credit sale must have the huge balances of the receivable. यानी बैंक की बात कर रहे हैं और जो नॉर्मल कंपनी है से जो क्रेडिट पे गुड्स बेचता है उसकी बात कर रहे हैं. In their balance sheet, though they have a huge receivable, but still they may face liquidity crunch to run their business. तो business expansion के लिए से they face a difficulty. One way may to adopt borrowing route, but this results in changing the debt equity ratio. बोरोइंग और कर सकते हैं पर उसमें क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है बैंक के लिए दैट से उनको रेशियोज मेंटेन करने हैं और हमेशा हायर डेट फाइनेंसिंग इज नॉट अ गुड साइन, which may not only be acceptable to some stakeholders but also put the companies to financial risk, which affects the future borrowing by the company. तो जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर बोरोइंग इफेक्ट होगा. To overcome this problem, the term securitization was, say, invented. Concept. The process of the securitization typically involves creation of the pool of asset from illiquid financial assets. देखो आपके आंसर में ये सब पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है. illiquid assets इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा धीरे धीरे आ रहा है ना उसको आप इमीडिएटली एनकैश कर रहे हो, such as receivable or loans which are marketable. In other words, it is a process of repackaging or rebuilding of the illiquid assets into marketable securities. These assets can be automobile loans, credit card receivable, residential mortgages, or any other form of the future receivable. Features. The securitization has following features. देखो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में फीचर्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन पूछा है, देन इन दैट केस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, लेट्स से योर आंसर शुड मेंशन क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, टूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर फाइनेंस, ट्रेंचिंग एंड होमोजीनिटी. तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आपको ये सब चीज अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फीचर्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन पूछा है तो आपको ये हेड पॉइंट्स है और उस पे जो लिखा हुआ है उसके रिलेटेड आपको कंटेंट बताने का है. द प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज इन द मार्केट backed by collaterals. Backed by का मतलब है like it is supported by the collaterals. Bundling and unbundling. When all the assets are combined into one pool, it is bundling. यानी हमने क्या किया कि जो सारे लोन्स दिए थे ना उनको क्या किया हमने से एक पुल ऑफ द असेट बना के स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर किया. अनबंडलिंग का मतलब क्या होता है, उसके सामने हमने सिक्योरिटीज इशू किया है. And when these are broken into the instruments of the fixed denomination, it is unbundling. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये वर्ड्स का मीनिंग समझोगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में फिर एग्जामिनेशन में लिख सकते हो. टूल ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. इन केस ऑफ द assets are securitized on non-recourse basis,
The securitization process acts as risk management as risk of default is shifted. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमको रिसीवेबल जो हमको मिलने वाला था वो डिफॉल्ट करेगा तो अभी हमको कोई लेना देना नहीं है, जो इन्वेस्टर है से उनको अभी उसका लॉस भुगतना पड़ेगा। सो नॉन रिकोर्स का मतलब क्या कि अगर अभी कोई डिफॉल्ट होता है ना तो भी हमारे पास नहीं आना, ये ऐसा कहना चाहता है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इन द प्रोसेस ऑफ securitization, financial instruments are tailored structured to meet the risk return trade off profile of the investor, and hence these securitized instruments are considered as best example of the structured finance. ट्रेंचिंग का मतलब हमने जैसे समझा था दैट से हम लोग अलग अलग टाइप का सिक्योरिटीज इशू करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कौन बेंडेड्स का रिस्क सबसे ज़्यादा बेयर करेगा, देन इन टर्म्स दैट से हमने ऐसा समझा था दैट से कैश फ्लोज आएगा तो किसको सबसे पहले मिलेगा, ऐसा portfolio of the different receivable or the loan or assets are split into several parts based on the risk return that they carry called trench का मतलब क्या होता है, ट्रेंच का मतलब होता है जैसे अलग अलग सेपरेट पार्ट्स करने का। ईच ट्रेंच कैरीज डिफरेंट लेवल ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न, है ना। बेडेड सो सबसे पहले बेयर करेगा, वो ऐसा जो ट्रेंच होगा ना उनका रिटर्न ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। होमोजीनियटी अंडर ईच ट्रेंच द सिक्योरिटीज इश्यूड आर होमोजीनियस नेचर and even meant for small investors who can afford to invest in the small amount.